हेलो 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 हेलो। तो वो गीला कर दिया थोड़ा सा, ये हटा लो यहाँ से, ये हैंड ऑप्शन खराब हो जाएंगे, ये थोड़ा सा गीला होती है। पीछे का एसी चला दो दोस्तों, गर्मी हो जाएगी नहीं तो। अरे यार सेट भी नहीं गया वो ठीक से। चलो आज इस पे पढ़ाएंगे छोटे पे। पता क्या, इट इज स्टक अगेन। मैं बोल रहा हूँ ये अपग्रेड ही करना पड़ेगा आज, तभी चलेगा। हाय गाइस, ऑनलाइन सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आज कोशिश कर रहे हैं Yes, यार, इनको ऐड या अपग्रेड करना पड़ेगा, आज ही अपग्रेड कर देंगे। अगर आज क्लास नहीं चली तो टुमारो वील हैव द अपग्रेडेड सिस्टम हियर, शाम को अपग्रेड कर देंगे। सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम, सिस्टम इज वेरी हैवी, सिस्टम इज नॉट हैवी, सॉफ्टवेयर आर वेरी हैवी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑनलाइन गाइज एक मैसेज कर दीजिएगा जस्ट इन केस बंद हो जाता है। yesterday I took the class, I'll take the class again for you guys because there were a lot of people here offline, but today if that happens I'll not continue the class and we will upgrade the system today itself so that there's no problem going forward. Okay, and I think right away it is stuck, कहते ही मुझे लग रहा है वो एक्चुअली सिस्टम का प्रॉब्लम है अपेरेंटली। हम लोग मॉडर्न बन रहे थे, ये चलेगा डेस्कटॉप पे ही, हमें अगर लैपटॉप पे चल जाएगा, सो इट इज नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप। ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। यही दवा बंद कर दे। ठीक है चलिए, सो कल का आपको एक वीडियो तो दिया था हमने, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, वी डिड गिव यू अ वीडियो एंड बता देना जैसे ही बंद होगा। वी डिड गिव यू अ वीडियो, आई होप आपने 1 घंटे का देखा होगा। बच गए आप लोग, यहाँ जो बैठे थे उनको वही सेम चीज़ 2 घंटे में समझ में आई है, मतलब मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया। एंड I will still take that class again, so we'll continue from there, आगे बढ़ेंगे आज। So today we have to start national income accounting. अरे अंकित कहाँ है? So let's start quickly. Let us see if it is till how long it works. ऑनलाइन वाले बीच बीच में हेलो हेलो बोलते रहो हर 2 मिनट में ताकि पता चलता रहे आप लोग हैं वहां पे। I don't think they're there. So national income accounting.
दो बातें हैं इसमें. First of all, what is national income, and second of all, why do we need accounting? Right? So what is national income, people? This is the first subject, topic basically. What is national income? Wealth of the nation? No. Is income and wealth same? What did we discuss? I am hoping that with a lot of this discussion, a lot of things has to be connected here and there. We created a difference between wealth and income. Same difference will apply here also. Okay? Wealth can be immense. Right? What is the difference between wealth and income? Wealth is your savings that you generate over time. And how do you generate those savings? Through your income. So can we say national income is the wealth of the nation? No. Right? Wealth of the nation can be a lot more than the national income. And it is in general. जैसे घर के भी होता है. Everything is related to your personal economy also. हमने इसीलिए in the first class we took this story that one person economy, if we extrapolate, it becomes the entire nation's economy or the world economy also. So whatever works for single person, the same thing, exactly the same, almost the same, works for the country also. So income is still something for the country which is being earned, right? जो income earn कर रहे हैं. और अगर हम national income की बात करते हैं, so who are part of this nation? और ये national का part कौन है? All the people who are in the country, not necessarily only citizens. There can be other people also in the country. हम national की बात कर रहे हैं, हम citizen की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about national income. So anything that is being earned in the country by anybody who is in the country should become part of that income. तो वो income होती है. हमने सबको add कर दिया. एक बंदे की income तो मेरी personal income, सबकी income national income. ठीक है? State की income क्या हो जाएगी? जो state में लोग रह रहे हैं, people who are living in the state, whatever they are earning. So state GDP is also there. That's right. होता है ना? There are state GDP also. Then you can also further bring it down to district level GDP also. Ki what is the GDP of this district? Right? So anything that is being earned in a particular geography becomes income of that geography. Simple as that. इतना समझिए. अब वो earning कैसे हम calculate कर रहे हैं? How are we calculating that earning? वो हमें समझना है game सारा. So national income पहले समझ में आई. Second part, why accounting क्यों करना है? Why national income accounting? Whatever we are earning, let us earn. क्या फर्क पड़ता है? Who is there to count? Who is asking? So why? Why do you want to do that? So that we can efficiently utilize resources. Efficiently utilize resources. How will you efficiently utilize resources through national income, madam? So we हाँ, बोलिए. by calculating the income, we can assess how much resources are being generated, and thereafter we can ensure equitable distribution and the proper utilization. Okay, वो तो बात की बात हो गई. चलो, equitable distribution, everything is a secondary matter. So she is suggesting that national income also gives us an insight into how the resources are being utilized. How can we say that? Whatever you are making, you have to earn. So when you earn, you have to work, and through work you are generating something. Only then you are earning, right? A lot of people don't realize that okay, you become part of something that is being created, and hence you are creating income. Income कभी नहीं आएगी जब तक आप कुछ output नहीं दे रहे. There is no income if there is no output. Simple as that. There has to be some output, be it services, be it goods. So you are making something. When you are making something, something must be consumed also. So we can assess how much is being consumed, and correspondingly what is the national income that is being created because of the resources that are being consumed. So based on that you can also assess कि भाई resource जितनी use हुई है उससे corresponding national income जितनी बनी है, is that desirable या desirable से कम है या desirable से ज्यादा है. Getting the point? So yes, you can actually do the assessment of resources also, or resource utilization assessment can also be done through the national income. कि यार पूरे साल में इतनी resource utilize हुई और इससे इतनी income generate हुई. Right? If it is less than desirable, then we are somewhere being inefficient. If it is more than desirable, then we are somewhere being extra efficient, which is not the case in India in general anyway. So you can, yes, one way you can say कि भाई it will help assess resource utilization.
ठीक है, that is one part. What else is the importance of national income? Vaishnavi was saying something. Okay, anything else? Why national income? Accounting. different sectors economy के perform कर रहे हैं. National income is also. हाँ जी. Sir, for international comparisons as well as domestic comparisons for business like decisions. Why do we need to compare? So as to ascertain like we are growing or at least fulfilling the needs. See, for growing, we don't have to make a comparison with international bodies or international or different other countries, right? For growing, we have to make an assessment with the previous year that we did. Last year, my income was this. This year, my income has increased 10%. That is the growing part. You are right that we need to compare, but why do we need to compare is the question. Sir, to calculate the help. Policy decisions. For comparison, what kind of policy decisions are we talking about? इंटरनेशनल कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप? पर्टिकुलर सेक्टर से क्या लेना देना है? नहीं, हम कर रहे हैं, आप मना मत करो. क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है. बहुत इमोशनल हो गए तुम. कार्बन एमिशन कम लेटर. What will happen with the purchasing power? Yes, sir. Online. Sir, to have a greater bargaining power at international level. What kind of bargaining power? Where do we bargain? For basically becoming an attractive destination for investment. Any country to grow require investment. If you are robust economy vis-a-vis income, that okay, my income is very good as compared to a lot of other countries, and my income is also increasing. Between last year and now, my income has increased 10%, while other countries' income has increased only 2%. जहाँ भी income ज़्यादा बढ़ेगी, you will get returns also there, better returns. So people across the world who want to make investment decisions, FDI, किसी ने बोला था यहाँ FDI, somebody said FDI, right? So FDI decisions are also based on how a country's economy is performing. And if we do not have one metric to compare, there is no way to make a sensible comparison. मैं बोलूं कि मैं तो पुराने जमाने के हिसाब से कौड़ियों में गिनूंगा, और कोई अमेरिका बोले मैं डॉलर्स में गिनूंगा, जर्मनी बोले मैं गाड़ियों में गिनूंगा. How will you compare? So you need that one metric which is common for everybody, so that you can actually rank the countries, which is highest, which is lowest, and accordingly you can make FDI decisions. कि यार अच्छा ये country अच्छी लग रही है because they are growing also very fast and their economy is also quite robust. इनके national income काफी अच्छा है, so people are working also there. That is, let's go and make investment there. I will make good returns. Getting the point? So international comparison के लिए भी चाहिए. For attracting investment. Somebody also said कि सर लोन लेने में हेल्प होती है. हेल्प के लिए नहीं सर. We don't want to keep ourselves poor so that we can get help. पाकिस्तान नहीं है हम अभी, है ना? We want to grow, we want to attract investment, not help. You want to become capable so that you have that standing in the world. ठीक है? So don't think कि help के लिए हम भी comparison करते हैं. There can be good income levels, national income levels, but still there can be widespread poverty in the country. अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला 2021 में या 2020 में 5.2 करोड़ people went back into poverty fold. 5.2 करोड़ people. दोबारा से गरीबी बढ़ गई है हमारे. We brought it down to 20 crores. 200 नहीं, we brought down poverty by 20 crores. We brought 200 million people out of poverty in the past 1 decade. ठीक है? This was 2018-2019 का information. But 20 crore में से 5 crore people went back into poverty in 1 year itself. 25% people slipped back into poverty in 2020 itself. ठीक है? That's the thing. So अगर हमारी national income तो कम नहीं हुई है, national income तो बढ़ी रही है, but still our poverty numbers are also on the rise. So based on poverty numbers, we'll get help also. वर्ल्ड बैंक से हमें ग्रांट मिलेगा, राइट? एडीबी से हमें ग्रांट मिलेगा, सो वो तो मिल ही जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल आर पुअर. ठीक है? दैट्स द इंटेंट ओवर देयर. सो बट यस, somebody said to have a bargaining power, better bargaining power. Somebody also said that.
So yes, somewhere you can say that stronger economies tend to have higher bargaining power when it comes to international organizations, multilateral organizations. WTO में developed countries have their way. Developing countries are left wanting for things. गरीब है, उनकी कोई सुनता नहीं है कि आप क्या ही करोगे. And why is that? Because they have to make contributions to the running of those institutions. And people who have more money, they can obviously contribute more. So if you have higher national income, you will have more money, you will be able to contribute more, and then you will have more say. ये समझने की चीजें हैं, ये लिखने की सच नहीं है. दो तीन बातें कि गरीबी है and having a better say and all that. Technically अगर जाएं तो ये emotionally तो ठीक है बातें, but technically these will not stand as a good point in your exam. तो वो मत लिखिएगा, समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि लोगों ने पॉइंट उठाया तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. व्हाट एल्स? सो इसका एक कोरोलरी हम बना सकते हैं कि डोमेस्टिक कंपैरिजन भी कर सकते हो, बट वो नेशनल इनकम की बात चल रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट state level incomes, so we do compare different states also, that okay, Maharashtra, Tamil Nadu has much higher national state GDP or state income vis-a-vis Bihar and UP, so we can do that also. That will also give us a picture in which particular state we have to invest. है ना, ऐसा नहीं कि इंडिया आ रहे तो बिहार ही चले गए. बिहार से कोई है तो नहीं यहाँ पे? ठीक है. तो ऐसा नहीं कि इंडिया आ रहे तो बिहार ही चले गए इन्वेस्ट करने. That would be a problem. Your money will get stuck. It is not going to come back. So you will also, within the country, you will also be able to judge कि okay, which state is better, where should I go, which is more business friendly, where is national income, state GDP higher, state income higher. So state income is a reflection that there's good business going on over there, and that is why people are able to make money. And good business would also mean that okay, the government is pro business, that is why good business is flourishing. Simple. So ये आपको ऐसे connect करना है, ठीक है? और क्या है? What else can we do? So एक sectoral comparison भी कर सकते हैं. We can also make a sectoral comparison. Is industry doing better, agriculture doing better, or services doing better? So for sectoral comparison also, we use national income accounting. कि industry का share 24% है, right? Services का share 56% है, and agriculture का share 18-19% है. Something like that. So you understand, okay, where is the money coming from, or where are people making more money, and what will you do with this information? You will make better policies, more targeted policies, right? Targeted policies saying, okay, I want to increase agricultural income, so let me make policies which will support agriculture sector. So this also helps in better policy making. Otherwise, this is basically database policy making to a certain extent, scientific policy making, rather than using a rule of thumb or hit and trial. कि बना दो doubling the farmer income, कर देंगे. कैसे कर दोगे भाई? Right? You have to understand what is the input, what is the output. Accordingly, you will have to take interventions, make interventions. आपने बस एक अशोक दलवाई कमेटी बना दिया और बोल दिया हम इनकम बढ़ा देंगे. कैसे बढ़ा देंगे? अब किसान कह रहे हैं भैया जितनी पहले थी वो कर दो, डबल तो बाद में कर देना. वो खत्म हो गई हमारी. That is the problem, right? This happens when you are doing hit and try. Okay, that is the issue. What else can you do? Since we are making policies, can we also assess those policies later? Okay, I made this policy hoping that income of this particular sector will increase to a certain extent. But after a year, I realized that income has not increased. That means there was some problem in the policy. So my policy was not as effective. So एक policy assessment हो गया. और मे बी जो पॉलिसी बनाई उससे मोर देन डिजायर्ड रिजल्ट्स आ गए. सो जो शायद वी डिड नॉट फोरसी, दैट आल्सो हैपेंड. या सो पॉलिसी असेसमेंट इज आल्सो वन ऑफ द दिस थिंग. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग पॉलिसी इफ यू आर नॉट एबल टू असेस इट? आप बना के छोड़ दीजिए, राइट? यू हैव टू एक्चुअली सी इफ इट इज हेल्पिंग और नॉट, राइट? Whenever we, again, as an individual, you have to think, wherever you put your money, you have to see if that money is giving you good returns or not. If it is not giving returns, then you have to tweak some idea कि यार ये तो चला नहीं मेरा काम. Let me tweak the idea, let me do something else. ठीक है? That's the thing, right? So these are the reasons for national income accounting. Clear? Any doubt in this? नहीं. ठीक है.
Now, one is why, and second is what is national income? Online guys, any doubt? No, sir. Okay. Clear? Now, what is national income? National income is basically measured through various parameters or various variables, right? And the most important variable that is there is called GDP, gross domestic product. This is that one number which was touted as the most important number in any economy, right? Ye one number to rule them all. कि ये एक नंबर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है that nobody requires anything else. When this was brought out, when was this brought out? GDP after World War II. I'll give you a history का एक छोटा सा document उसका GDP की history, right? It was the creation of John Maynard Keynes. Keynesian economy की start हुई थी जब classical economy fail हो गई, right? So Keynes came out with this idea कि we have to have this number which will collect all the information that is required and also help. It will be helpful in comparison of different economies across the world. But it was in 1937 when this was instituted. But by 1950 itself, people started to realize that GDP is something that measures everything except what is important. ठीक है? Human well-being, human development, वो सब GDP में, environmental degradation, वो सब GDP में नहीं आता है. GDP does not show us that. वो हम आगे बात करेंगे. Why GDP is not a good number for measuring growth or measuring development. Growth तो measure कर रहे हैं. What is the difference between growth and development? Growth is only numbers. Growth is quantitative. quantity. I Yes. was earning this much today. I am earning more tomorrow. That is my growth. But have I become smarter or have I become stupider? Or has my lifestyle improved? Has my conditions of living improved or not? That will become part of development. So India में भी growth तो हो रही है, क्या development हो रहा है? ऐसे मत बोलो यार. ठीक है? हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है. It is not happening at the pace that we would expect it to happen, or we would want it to happen based on the population growth that is happening. Right? While the numbers, GDP numbers are rising, poverty is also rising again, once again, especially after COVID and all. And at the same time, the average income of people is also not really rising as such. ठीक है? तो growth तो हो रही है, development नहीं हो रहा है. तो क्या है GDP? GDP की full form है gross domestic product. So अगर ये तीन वर्ड हम समझ लें और एक हिडन वर्ड है यहाँ पे फाइनल, तो अगर हम ये चार वर्ड समझ लें तो हमें जीडीपी समझ में आ जाएगी. What exactly is GDP, right? So let's do this. I need more space. So क्या क्या टर्म्स हैं? एक तो है ग्रॉस. व्हाट इज दिस ग्रॉस हियर? व्हाट इज दिस डोमेस्टिक हियर? एंड व्हाट इज दिस प्रोडक्ट हियर? एंड व्हाट इज फाइनल हियर? अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, एक हैंडआउट भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. सो जीडीपी इज नथिंग बट द money value of all the goods and services that are being produced within a territory in a given period of time. ठीक है? Every single thing is important here. ठीक है? Territory important है, money value important है, all goods and services important है, and given period of time भी important है. When you are measuring something, you need a time frame first of all. And what is the time frame in general? 1 year, right? It can be anything depending upon who is taking, but generally well accepted standard is that will take 1 year as the time frame. ठीक है? एक definition लिखी लीजिए GDP की.
it is the money value of all the goods and services, all the final goods and services, money value of all the final goods and services produced in an economy or in a territory, produced in a territory in a given period of time. In a given period of time. Full stop. और ये जो 1 ईयर होता है, इसको हम जनरली ये 1 ईयर होता है, और इसको 1 ईयर को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. कब से कब स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? क्विक बेसिक्स. 1 अप्रैल से 31 मार्च इज आवर फाइनेंशियल ईयर. फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2023 तक है. सो व्हाट विल बी दिस फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड? 2022-23 और FY23. ध्यान रखिएगा FY22 नहीं होता है, FY23 जिसमें खत्म हो रहा है. राइट. सो दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर. इसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, सब पता ही होगा. कब से कब तक स्टार्ट होता है? फर्स्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल टू 30th जून. सेकेंड इज 1 जुलाई टू 30th September. Third quarter is, and final quarter is 1st January to 31st March. We also divide this into quarter and we collect all the information on a quarterly basis only, so that we can do a course correction midway also. Let's say we were expecting our national income or GDP will be 300 lakh crores this year, and by the end of second quarter we have only reached 110 lakh crores, right? So we can make a quick course correction कि यार लग रहा है थोड़ा slow हो गया. Let's try to push harder for the next 2 quarters so that we can reach the target of 300 lakh crores, right? So इसलिए quarterly assessment भी करते हैं कि per quarter क्या improvement हो रहा है, so that we can know कि हमें पहुंचना कैसे, right? That is the idea. क्या ये financial year सबका same होता है? सबके अलग अलग होते हैं. Financial year can be anything for anyone. जैसे हमारा 1 अप्रैल है और बांग्लादेश म्यांमार का आई थिंक 1 जुलाई से स्टार्ट होता है. नेपाल का 16 जुलाई से स्टार्ट होता है. यूएस का 1 जनवरी से स्टार्ट होता है. कुछ लोगों का 1 अक्टूबर से भी स्टार्ट होता है. आई थिंक श्रीलंका का या किसी का 1 अक्टूबर से भी स्टार्ट होता है. सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी कब से डिसाइड करना है. तो वो 1 साल मेजर करते हैं अकॉर्डिंगली, और जनरली ये सीजन के हिसाब से वो मेजर करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्टिव सीजन यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट. नेपाल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से स्टार्ट करता है. 16 जुलाई से 15 जुलाई तक उसका वो होता है. इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, तभी कुछ आगे नहीं हो पा रहा है. वो गिनते रहते हैं 16 आ गई है 15 आ गई. 1 तारीख से करो यार, क्या परेशानी है? नहीं सर, वो 1 साल मान लेते हैं, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता है, कर लो कंपेयर. उनका फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट होता है ना. FY23 उनका भी FY23 रहेगा, तो वो उनका डेटा बाद में आएगा, तो जुलाई में कंपेयर कर लेंगे. सर 3 महीने छुट्टी दे दो हमें, आने दीजिए डेटा जब भी आता है. इट वर्क्स लाइक दैट. ठीक है, चलिए. सो वी सेड इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. सो ग्रॉस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस ग्रॉस ओवर हियर? ग्रॉस इज ऑल, एंड ऑल व्हाट? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ये ग्रॉस और नेट समझ में आएगा क्योंकि यहाँ ऑल समझना है. ग्रॉस इज नॉट टोटल. टोटल मनी वैल्यू नहीं, ऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम. सो होता क्या है बेसिकली, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट? एंड फॉर दैट प्रोडक्शन वी आर यूजिंग सम मशीन्स जो ओवर टाइम खराब हो रही हैं, घिस रही हैं यूज करते हुए. दे आर डिप्रिशिएटिंग. सो द नेट आउटपुट जो आप बोलोगे, व्हाट विल दैट बी? व्हाटएवर वी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाटएवर वी डेप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस. आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सो यू पुट सम मनी फर्स्ट. लेट्स से 1 लाख यू हैव पुट इन टू स्टार्ट अ बिजनेस, and final income that you made, total income that you made was 2 lakhs. So would you say I made 2 lakhs in this business? No. What would you say? I made 2 minus 1, which is 1 lakh. So my net income would be 1 lakh. My gross income will be 2 lakh. So जो मैंने लगाया है, that has to be subtracted to get the actual true output of the economy. तो वो net और gross का concept है. अभी हम gross की बात कर रहे हैं, GDP. उसमें हम we are not counting क्या input हुआ है. अभी हम 2 लाख काउंट कर रहे हैं, 1 लाख नहीं, right? So GDP calculates gross.
What is domestic? This is the territory. Whatever territory you are counting. यहाँ पे थोड़े से concepts confusing हो जाते हैं कि territory में क्या क्या आता है. क्या क्या आता है territory में? इंडिया की बात करें, what all comes within the territory of India? The entire set of mainland. What else? Lakshadweep, Andaman Nicobar, all the islands also. हाँ, POK आता है क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है क्या? आएगा ही सर? क्यों? संघी हैं हम? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना नहीं रखी है, इलेक्शन नहीं होते वहां. हाँ, so it is part of the national income, but we are unfortunately unable to assess क्या बन रहा है वहां पे. इतनी टेरिटरी तो है ही वो, सिंपल इज दैट. तो हम उसमें कुछ काउंट नहीं, वो वहां पे लिखा होता है कि नॉट कैलकुलेबल समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इस टाइप से. तो वो है तो हमारा ही पार्ट, राइट? दिस इज वन पार्ट. नाउ व्हाट अबाउट द टेरिटोरियल वाटर्स? ज्योग्राफी कभी पढ़ी होगी आप लोगों ने? यू मस्ट हैव रेड ज्योग्राफी. दैट टेरिटोरियल वाटर्स आर 12 nautical miles. 12 nautical miles is the territorial waters. So whatever is found in that, it could be fishery, it could be some polymetallic nodules, it could be some other minerals, or the energy that probably you will be creating, tidal energies जो होती हैं. What will that become part of our economy? Why? Boundaries तो बाहर है. Territorial waters are part of boundary. What about the exclusive economic zone जो 200 nautical miles तक आता है उसके बाद? That will also become part of our territory because that is given to us. That whatever you make out of that, that you are allowed to sell it, you are allowed to claim ownership of that. इसीलिए exclusive है. 12 से 12 12 12 दोबारा बोल 12. हाँ, याद रख. ठीक है. So 200 nautical miles तक जो भी whatever you are able to find, be it oil, be it metals, minerals, be it energy, be it whatever, is part of your GDP. What about beyond 200 nautical miles? नहीं. कहाँ जाएगा? एम्बेसी में जाएगा वो पानी. अबे beyond 200 nautical mile की बात करूं. ओपन सी जो आ जाती है after 200 nautical miles, there are oil rigs there also, right? What will happen to that oil rig? Who will claim that oil rig? जिसकी लाठी उसकी भैंस, as he said, जिसके हाथ लगा उसका हो गया. So it depends on the ownership of that oil rig. If ONGC has the ownership of the oil rig beyond 200 nautical miles, because it is international waters, open waters, so that output will be part of India's GDP. If Shell has the ownership of that oil rig in the open waters, that will become part of the GDP of USA. It depends on the ownership of the company, because how else will you decide? How else will you decide? Any international open water will have close proximity to a lot of countries. Everybody will fight कि मेरी GDP में डाल दो. मोदी तो सबसे पहले चले जाएंगे, मेरे को GDP बढ़ानी है, सब मुझे दे दो, है ना? So that will become a problem. So it depends on the ownership. Then other territorial areas होते हैं जो embassies की बात कर रहे हैं. What about embassies? India में there are multiple embassies of different countries. Will that become part of India? Why? India में तो है वो. क्यों नहीं मानते? Embassies are generally foreign lands. That is why they can control who will enter, who will not enter. That is why you might have seen a lot of movies. कत्ल करके घुस जाओ embassy में, अपनी बचा लेंगे. The domestic police is not able to get into the embassy to catch the criminal. Right? You do anything and you just get into your embassy in a foreign land and nobody can touch you till the time you're there. Edward Snowden का भी यही हुआ था. Right? US से निकल के भाग के he went and sat somewhere in Sweden, but Sweden also has allegiance to US and UK. So Sweden would have also handed him to US, but then he went and sat in the embassy of Russia. उससे पहले कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग यार, सर्च करना. हाँ, थोड़ा न्यूज़पेपर जनरली पढ़िए. ओके, रशिया में तो अभी गया वो, क्योंकि अब रशिया ने लड़ाई कर ली सबसे. पहले नहीं गया था वो. अब रशिया जबरदस्ती उंगली करने के लिए बोलेगा आ जाओ हमारे पास, हम कुछ नहीं होने देंगे देखो. Right? Because they want to flex now. So you go and sit in somebody's embassy so that local police cannot enter. So embassy is considered not part of our land but their land. But embassy में ऐसा क्या हो रहा है जो GDP का मैटर है? Everything. If you go into the US embassy, it's a township in itself.
There are restaurants, there are supermarkets, there are schools, there are hospitals, there's everything. So they are generating services over there. They are not free for the people who are living inside. They charge money from them. So all that services that are being generated over there, that becomes part of US's GDP if it is happening within US Embassy in India or anywhere across the world. Similarly, the same thing happens for Indian embassies across the world. हमारी बहुत छोटी छोटी होती है, हमारी टाउनशिप का फंडा नहीं है, होता कुछ नहीं हमारे में, है ना, हमारे चुपचाप मेड को ले जाके छुपा लेते हैं बस, ठीक है. So in our case also, basically, if anything is happening in the embassy, if any services or products are being generated in the embassy, that will become part of our GDP. Embassies, similar correlation can be developed with military bases also. US has a lot of military bases across the world. So anything that is happening there also becomes part of US's GDP. India has some military bases now, 4-5. उसमें जो कुछ हो रहा है वो हमारी GDP का पार्ट बन जाएगा. चल रहा है क्या? Online guys, are you there with me? Yes, sir. Okay. So that. ठीक है. Similarly, one more thing. और क्या आता है? टेरिटरी में एम्बेसी हो गया, एयरपोर्ट, प्लेन्स तो भी आ रहे हैं. एयरपोर्ट, आर पार्ट और देयर पार्ट, पक्का? एयरपोर्ट आर पार्ट. बट सिक्योरिटी चेक के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के उस तरफ जो होता है वो हमारा पार्ट नहीं मानते. उनके में इफ यू आर मेकिंग अ पोर्ट, if India is developing any project outside India, let's say Iran Chabah port, so that economic activity is happening in Iran, Iranian territory. There is no ambiguity there कि ये open waters हैं या कुछ है, right? It will be territorial waters of Iran anyway. So that economic activity will become part of Iran, irrespective of ownership. अगर territory है, then ownership doesn't count. Ownership comes into play when there are open waters और इंटरनेशनल बाउंड्रीज और इंटरनेशनल एरियाज जिसपे किसी का क्लेम नहीं है, उसको ओनर का क्लेम होता है. और अगर टेरिटरी है तो अंदर ओनर कोई भी हो. इन इंडिया इवन अ पाकिस्तानी इज मेकिंग समथिंग, बांग्लादेशी इज मेकिंग समथिंग, अ यूएस गाय इज मेकिंग समथिंग, एवरीथिंग पार्ट ऑफ आवर इनकम ओनली बिकॉज इट इज हैपनिंग इन इंडिया. टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ये. दो होते हैं, एक जीडीपी है, वन इज जीडीपी विच इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, वन इज जीएनपी, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट और पीपल कॉन्सेप्ट. उसमें हम देखते हैं कौन कहां का है. अभी हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है. टेरिटरी में कुछ भी हो रहा हो, वी डोंट केयर कौन कर रहा है. ओके अगर पाकिस्तानी आके बम भी बना रहा है और वो बेच रहा है, वो भी हम जीडीपी में ऐड कर लेंगे अगर काउंट कर सकते हैं. सिंपल सी बात है ये. दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दिस इज द आइडिया. नाउ कम्स व्हाट ही इज सेइंग. पढ़ के आया लड़का. एरोप्लेन्स की बात करते हैं. दैट इज ऑल्सो सर्विस, अ लॉजिस्टिक सर्विस. इफ देयर इज अ फ्लाइट गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, ओके, हाउ विल वी डिसाइड किसकी टेरिटरी में आएगा? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर से जा रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल एक बंदा झांक के देख रहा है, पाकिस्तान आ गया उसको दे दो ये वाला हिस्सा, फिर अफगानिस्तान आ गया ये वाला हिस्सा उसको दे दो, काउंट कर रहे हैं बैठ के, राइट? इट हैज टू गो इन वन कंट्री समवेयर. वेयर विल इट गो? Again, international area है. You are going in international airspace. So it again depends on the ownership. ठीक है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अगर जब तक गुजरात के बॉर्डर तक नहीं पहुंचेगा तब तक इंडिया में काउंट करेंगे क्योंकि वाला हिस्सा तो इंडिया में. That will become too complicated. Ideally करना चाहिए, but who will keep a check? और ये छोटी मोटी चीजें शॉर्ट चेंज है ना? That is the idea. So anything on international territory becomes part of that country's GDP जो ownership होती है. So अगर दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ्लाइट एयर इंडिया की है, then it becomes part of India's GDP. But if the same flight is of United Airlines, it becomes part of US's GDP. If the same plane is of Lufthansa, then it becomes part of Germany. The flight may not go to Germany, but it is a flight owned by Germany. It is operating on international waters. तो कज़ाक क्यों जा रहा है तू? पहले तो ये बता. हाँ चलो. हाँ ये बताना चाहता है कि कज़ाक गया है. सब लोग सुन लीजिए. नहीं हाँ
पहले तुझे पता कैसे चलेगा पाकिस्तान आ गया? तू कैसे देख रहा है पाकिस्तान आ गया? वो बता देते थोड़ा सा। अच्छा हाँ, अभी क्या समझाया मैंने इतनी देर से? कौन झांक रहा है नीचे कि कौन सी कंट्री आ गई और कितना कितना कहाँ बिका? इस मिनट से इस मिनट तक पाकिस्तान पे थे और वहां काउंट करते हैं। पाकिस्तान वाला भी नीचे से देख रहा है कि प्लाई ना काउंट करो भाई यहाँ से। नहीं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर स्पेस है। द एयर स्पेस इज नॉट ऑफ पाकिस्तान पर्टिकुलरली। वो मना वना कर देते हैं, वो अलग बात है आजकल, बट इट इज स्टिल एन इंटरनेशनल एयर स्पेस। ठीक है, वो सिक्योरिटी रीजन से आप मना कर सकते हो, दैट इज ओके, राइट? बट international airspace, anything happening in international waters or international airspace becomes part of the GDP of the owner's country. Simple as that. Clear रखिए इसको। बट अगर एयर इंडिया का प्लेन न्यूयॉर्क से LA जाएगा तो किसमें काउंट करेंगे? Now everything is happening within the US. US is territory. So all services are generated within US's territory. अब अगर टेरिटरी आ गई है क्लियरली, सो ओनरशिप मैटर करती है क्या? नहीं मैटर करती। Then it becomes part of the territory. Getting the point? नहीं, कंफ्यूजन है कुछ? वो ठीक है। तो इंडिया में भी तो मैकडॉनल्ड्स में इनकम जनरेट हो रहा है, तो यूएस के लिए हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, जीएनपी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जीएनपी पे आएंगे तो समझेंगे। जहां भी टेरिटरी आ गई वहां पे ओनरशिप का कोई रोल नहीं है जीडीपी में। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी ओनली, नथिंग एल्स। नो डाउट, नो कंफ्यूजन देयर। क्लियर? सो सेम अप्लाइज विद शिप्स आल्सो, क्रूज शिप्स एंड ऑल दैट, because they are commuting in international waters, right? That's the idea. Same logic है बिल्कुल। So this is about the territory component. ठीक है? पेपर मेरा है तेरा है? 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, ठीक है? और 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। टेरिटोरियल वाटर्स में पूरी ओनरशिप आपकी है, एसेट्स की भी। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन दोस 12 नॉटिकल माइल्स। यू कैन मतलब हॉट परस्यूट भी कर सकते हो आप अपने टेरिटोरियल वाटर्स में, कोई नहीं रोकेगा। बट इफ यू आर गोइंग फॉर हॉट परस्यूट बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स, आई थिंक ज्योग्राफी में पढ़ना ये, तो अब आपको परमिशन लेनी पड़ती है यूएन क्लॉज से। ओके? और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यू ओनली हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। You can explore, you can exploit, anything that is coming out is yours, but the area is not yours. 12 nautical miles, the area itself is yours. You can do whatever you want. वो territorial waters में आता है। ठीक है? चलिए, so territory clear हो गई? This is the territory component. Then product is all the goods and services. Everything that is being produced, from a needle all the way to an aeroplane, and all the services also, banking, hospitality, education, IT, BPO, everything. ठीक है? Travel, tourism, whatever you can think of, all the services become part of the goods and services over here. And what is this final? Final is the final stage of the product. Yeah, out of the economic system. Out of the economic system. अब इसमें कोई further valuation नहीं होगा. We discussed intermediate goods and final goods yesterday. Same idea. And who decides if a good is intermediate or final? The usage, the utility, right? Same example, if you bring a loaf of bread, you consume it at home, it is a final good for you. If you use it and make a sandwich and sell it, it becomes an intermediate good for you. Okay? That's the idea. So only final goods are counted. Why not intermediate goods? Because then it becomes a double counting. When I'm selling a sandwich, I will price it keeping in mind how much I spent on the loaf of bread also. So if I brought, if one slice of bread is 10 rupees for me,
right? And if I count my labor of making the sandwich and other raw materials, ingredients of a sandwich at 70 rupees, right? So I will at least sell it for 80 rupees. 10 rupees slice of bread ka add karunga main. So if I count the slice of bread separately also, so 10 rupees uska और 80 rupees sandwich का, उसमें 10 rupees दोबारा से add कर दिया मैंने. So that becomes a problem. So if we consider intermediate products, अभी examples लेंगे बहुत सारे, समझ में आ जाएगा, don't worry. Then double counting happens, and double counting will give a distorted picture of GDP. क्योंकि आप एक ही चीज को दो बार काउंट कर रहे हो. ये अगर ये अलाउड होता तो इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी होती आज, क्योंकि इस काम में हम चैंपियन है. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया. चलिए, तो आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. हाउ डज इट वर्क? Online guys, if you're not able to understand something that I said in Hindi, generally I try to restate that in English as well. But अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, there's a propensity to move towards your mother tongue very often. But if you feel that there's something that you missed because I said something in Hindi, please ask me again in the class itself so that I can repeat that. But I keep in mind that at least all the concepts will be taught in English or at least repeated in English as well. All right. There might be some stupid things in between. I'll not call them funny. Those that lose their punch if they are said in English. So sometimes there is no other way but to say it in Hindi. जैसे जब मैं मोटा भाई की बातें करूंगा तो मोटा भाई इंग्लिश के साथ जाते नहीं अच्छे से, है ना, मजा नहीं आता फिर. Anyway, चलिए. So what did we say? It is the money value. Why money value? Because it can be counted easily. Otherwise, how difficult would it be to calculate GDP? What is the GDP of India? 10 lakh cars, 50 lakh motorcycle, 20 lakhs Activa scooter, right? 10 million apparels, so on and so forth. It will be a very difficult task to first of all list it down and send out KRE GDP. And for comparison purposes also, how will you sit and compare? So what is one common metric? Money value. So let's take money value of all the things, put it together and come up with a number. Simple as that. So money value of everything that is produced in the territory of the country. So if the country is making only one car of 5 lakh rupees, then the GDP of that country would be 5 lakh rupees. Simple as that, nothing else, right? So if you're making, let's say 100 cars at 5 lakhs, 1000 bikes, ये सिर्फ समझ लो, at 75,000, then rice, 1000 kg rice at 30 rupees. Thank you, sir. Okay, so what will be the GDP in this case? Calculate नहीं कर पाएंगे? ये कितना हुआ? 5 CR. ये कितना हुआ? 7.5 CR. 75 lakhs हुए, 7.5 CR हुआ. हाँ, और ये कितना हुआ? 3 lakhs. So 12. ज्यादा हो गया. ठीक है? Something like that. So you take money value of everything, put it together, वो GDP हो गया. If the country is making only one product, one item, then GDP is that, full stop, nothing else. Right? So you add anything and everything, it becomes part of GDP, and whatever is being produced, you simply have to add that. तो अब intermediate के कुछ example लेते हैं. इसको ले लेते हैं. एक था रमेश, दूसरा कौन था? सबको पता है, दोनों भाई थे. Right? We are producing, let's say, 1000 kg of wheat. This is sold. Okay, somebody produced 1000 kg of wheat. Ramesh bought 500 kg of wheat at rupees, let's say 30 per kg. कितना हुआ ये?
right? And Suresh bought 300 kg wheat at ₹30 only. ये कितना हुआ? Now what is the, सिर्फ यही बन रहा है. This is the only thing that is being produced in the country. What is the GDP of the country? 15,000? 24,000 is the GDP of the country? कुछ नहीं सुन रहे हैं सब. What is the GDP? What is the definition? All the goods and services produced in the economy. Did I say sold in the economy? What did I say? Produced in the economy. So क्या हुई GDP? 30 into 1,000. 30,000. If it is sold or not, it is not a concern. क्या बना है? Money value definition पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. It is the money value of all the goods and services produced in an economy, not sold in an economy. ये नहीं बोला मैंने. आपने 1,000 kg wheat बनाया. Let's say it did not sell even a single kg. Will the GDP of the country zero? No. Output तो है. So 1,000 kg is the output. So output की value देख रहे हैं हम, production की value देख रहे हैं, ना कि sale की value देख रहे हैं. That is why this example. Keep that in mind. Online guys, is it clear? सर. Yes, madam. सर जैसे जब भी हम मनी वैल्यू देखते हैं तो उसमें और सेलिंग वैल्यू देखते हैं तो उसमें प्रॉफिट और जो भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है और साथ में इन्फ्लेशन दैट इज आल्सो बीन इंक्लूडेड. तो डजंट इट शो अ इन्फ्लेटेड और इमेज ऑफ जीडीपी? बिल्कुल मैडम, उस पे आएंगे अभी. It definitely shows inflated image, but here a good point that she has raised, right? Let's say this wheat, instead of 30 rupees, this guy bought it for 50 rupees per kg, while this guy bought it for 30 rupees per kg. Okay, this becomes 15,000 again, and let's say 500 ये इस बार, ताकि आपको confusion दूर हो जाए. Now what is the GDP of this country? 500 kgs यहाँ, 500 kgs यहाँ. At 30 rupees Ramesh bought, at 50 rupees per kg Suresh bought. What is the GDP of this country now? 15 plus 25, 40? Nahi. Do you think the government goes to every single shop and see at what price somebody has sold something or somebody has bought something? Again, it is not about what is sold. It is about what is produced. So government will have a fixed standard. कि was 1,000 kg rice produce हुआ है या wheat produce हुआ है, so that will be counted at rupees 30 per kg or even 25 per kg. इस केस में 30 मान लेते हैं. Now if somebody is smart and selling the same shit for 70 rupees a kg, it is his smartness. But production तो 1,000 kg हुआ है और उसका average एक 30 rupees का बनता है, तो I will count it as 30 rupees a kg only. So it does not matter at what price you have sold it. It matters what is the standard price for the product, which is used by the statistics department. Who will go to every shop and every person की सर आपने कितने पैसे दिए थे, वो लिखना चाहता हूं मैं. It will be such a hassle. 300 million tons of grains is produced. How will you measure किसने कितना pay किया है? Every city has a different cost. Same product you buy in Delhi, you will get it at 50 rupees. You go to Noida, probably 45. 50 kilometers और चले जाओ बुलंदशहर, ऐसा लगेगा 1970 में आ गए हो. You get it for $30 there. और वहीं गांव में चले जाओगे तो 15 रुपए में मिल जाएगा. Same thing. Who will keep a track? Nobody can keep a track. So you come up with a standard value in accounting. कि बॉस राइस इस साल 25 रुपए किलो पे गिने जाएंगे. Wheat इस साल 20 रुपए किलो पे गिना जाएगा. We will count wheat at 20 rupees a kg. We will count rice at 35 rupees a kg or whatever. And that is used to count the GDP. So again, be very clear. It does not matter if it is sold at some different price. What matters is how much is produced and what is the standard price that is being set for that. ठीक है? Yes. सर बन गया सिस्टम में, जब तक बिका नहीं तो उसको हम अलग टाइप से काउंट करते हैं. उसको इन्वेंटरी के फॉर्म में काउंट करते हैं, बट काउंट कर लेते हैं कि फॉर दैट ईयर वो बन चुका है.
हम क्या बोल रहे थे आइडल बैलेंस क्या हमने जो भी हम फाइनल बैलेंस कैसे निकालते हैं कि मिनिमम किस प्राइस खरीदा नहीं, कितना प्रोड्यूस हुआ है फाइनली विच इज रेडी फॉर सेल डायरेक्टली। तो वो इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट वहां जाएगा, अभी आ रहे हैं उसको, आ रहे हैं अभी उस पर बिल्कुल। बट ही मेड अ गुड पॉइंट जिसको किसी को डाउट नहीं आया कि लेट्स से दिस ईयर नथिंग वाज सोल्ड and next year he said that final good is defined when it is out of the economic system. So he is saying if nothing is sold then it is not out of the economic system, right? Then how do we decide? Is that what he's saying? Yes. क्या लगता है? Again we are talking about production for that year. For that year if it is not used, it is kept in a shop, it will be counted as final product only for that year. अब next year जो होगा, let's say same loaf of bread is used to make a sandwich, पहली बात तो खराब हो जाएगी, but anyway 31 मार्च को एक बनाई थी, वो 31 मार्च को नहीं बिकी, अब उसको हम 1 अप्रैल को यूज कर रहे हैं। एक रियल एग्जांपल, ओके। सो 31 मार्च तक ब्रेड will be counted as a final product there because it was made in the previous year, and I will add 10 rupees in my GDP there because it does not matter if it was not used. Now on 1st April when I'm using that bread, बहुत डिटेल में जा रहे हैं unnecessary वैसे, on 1st April हम when we are making sandwich out of that, okay, so ideally जो होना चाहिए, it should happen is that we will not count that bread in the new year. First of all, we will only count the remaining part. मान लो 80 rupees का अगर sandwich है तो 10 रुपए की हम bread उसमें count नहीं करेंगे because ideally we had counted it in the previous year. Ideally, okay. So that is how it happens. In an ideal situation, this should happen. मैं भी बता ही रहा हूँ, हाँ। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही तो बोला है मैंने। नहीं, वो नहीं हो सकता ना पैरामीटर सर। हाउ विल यू गो एंड मेजर कहाँ कितने का बिका, ये बताओ। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर डन फॉर ईज पर्पसेस, और ये जो मैं एग्जांपल बार बार कह रहा था, आइडियली दिस शुड हैपन फॉर ईज पर्पसेस। वी विल अगेन ऐड दैट ब्रेड नेक्स्ट डे। किसको पता है कि कौन सी ब्रेड उठाई है इसने जो 31 को बनी थी या 1 को बनी है? सो ये थोड़ी बहुत एरर्स एंड ओमिशंस में काउंट हो जाते हैं, भूल चूक लेनी देनी जिसको बोलते हैं। देयर विल बी वेरी फ्यू सच आइटम्स, a lot of things that you are counting कि यार ये बना, ये इंटरमीडिएट है and all that, right? मोस्टली उसी साल में यूज हो जाता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि वो अगले साल यूज होगा। इट विल ओनली हैपन when there are these, जहां पे बहुत ग्लट आ जाता है सिचुएशन में, they have produced too many things, like China produce a lot of steel, but then China, all those economies or all those companies also try to sell all that what they produce in that year within that year itself, ठीक है? बिकॉज इन्वेंट्री मैनेज करना एक अलग हैसल है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्वड देयर। सो वो कोशिश करते हैं हो जाए, बट ये एक ग्रे एरिया है जहां पे बहुत सारे एक एंट्री होती है एरर्स एंड ओमिशंस की जीडीपी कैलकुलेशन में, वो इसी पर्पस के लिए होती है जहां ये चीजें ओवरलैपिंग चीजें आ जाती है, राइट? सर रिटेलर ने ले लिया, खत्म हो गई बात, कुछ नहीं हटता ऐसे। हाँ, यस मैडम। सर कांट वी से कि जब स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट खुद से ही ये प्राइसेस डिसाइड कर रहा है, तो वन इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअल जीडीपी इंडियन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। अनदर इट हैज नो क्रेडिबिलिटी एट इंटरनेशनल लेवल बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ ट्रूली द इनकम दैट इज बीइंग जनरेटेड, but it is definitely reflective of the GDP because every country use the same thing. The standards are set, right? If the standards are illogical, then obviously no country will accept your number. अब मोदी जी ने क्यों नहीं बढ़ा ली GDP? Why didn't we say we are $5 trillion economy today and the wheat today which is sold for let's say 20 rupees is not 20 rupees but 100 rupees, and we will count GDP at 100 rupees per kg of wheat. Because then credibility is lost. आप थोड़ी बहुत बदतमीजी कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं। सर्विस के भी सब स्टैंडर्ड सेट हैं सर,
Internationally, across the borders, mostly standards are set. Again, depending upon the living standards over there, again depending upon the level of incomes over there. ठीक है, सर्विस का स्टैंडर्ड पर आवर कितना आदमी ने काम किया है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है. नंबर ऑफ मैन आवर्स दैट हैव गॉन इन टू डेवलप दैट सर्विस, दैट इज हाउ इट इज काउंटेड. अगर आप आईटी कंपनी में जाएंगे, so you will see that they count the prices of the service that they're delivering. जैसे TCS है, Wipro है and all that. They submit the proposal on the basis of number of man hours. That okay, to produce this particular software, to develop this particular software, right? 20,000 man hours will be required. And man hour का counting होती है फिर. That okay, this man hour will be counted for this particular thing. अगर senior engineer है, उसका 100 euros per hour count करेंगे. जूनियर इंजीनियर है तो उसका 60 यूरोस पर आवर काउंट करेंगे. सो सर्विसेज का स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मैन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है. सो इट इज अ स्टैंडर्ड सेट अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑब्वियसली यूएस विल हैव अ हायर पेमेंट पर आवर विज़-अ-वी इंडिया, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड टू इंडिया आल्सो. सो इंडिया की जीडीपी ऐसा नहीं है कि यूएस के इनकम लेवल्स पे काउंट कर लेंगे हम कि भाई यूएस 100 यूरोस और या $100 पर आवर दे रहा है. यूएस अगर $100 पर आवर दे रहा है तो इंडिया भी $100 पर आवर पे काउंट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा. इंडिया विल काउंट जो इंडिया के इनकम लेवल्स हैं. इफ इंडिया में 3,000 रुपीज पर आवर का चार्ज है तो इंडिया विल सेट अ स्टैंडर्ड एट 3,000 रुपीज पर आवर. बहुत अननेसरी कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं हम, इतने में मैं जीडीपी खत्म कर देता, बट जरूरत नहीं है इन चीजों की. समझने के लिए ठीक है, बट दिस इज द आइडिया, राइट? सो स्टैंडर्ड आर सेट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्रेडिबिलिटी इज सेट अकॉर्डिंगली. बंदे मैडम, चल गया शायद. गाइस आर यू देयर? बंद हो गया. Yes, no, no luck. I'm unable to leave the meeting also.